परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। परम पूज्य 13वें सोना रिम्पोचे के कठिन प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन के इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक कार्यक्रम जो पूरी तरह समर्पित है भगवान बुद्ध के ज्ञान, दर्शन और बौद्ध धर्म को। इस कार्यक्रम के पिछले 7 एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं परम पावन 17वें गेलवांग करमापा की केरल यात्रा को। इस एपिसोड में अब आगे देखिए परम पावन की केरल यात्रा से जुड़ी कुछ और झलकियां। भारी तादाद में राह तकते लोग परम पावन 17वें गेलवांग करमापा के आगे सिर झुकाकर आस्था जताने वालों का जमावाड़ा खुद ही बयां कर देता है कि भगवान बुद्ध और उनके दर्शन में लोगों की कितनी सच्ची और पक्की आस्था है। परम पावन करमापा पधारे हैं चोकोलिंग मॉनेस्ट्री में। परम पावन का पारंपरिक तिब्बती ढंग से जोरदार स्वागत किया जाता है। मॉनेस्ट्री के लोगों ने स्वागत के लिए लंबे अरसे से तैयारियां कर रखी हैं। परम पावन का यहां पर आगमन इस नवनिर्मित मॉनेस्ट्री के उद्घाटन के लिए हुआ है। भारी तादाद में मौजूद यहां पर लोगों को देखकर अगर आपके जहन में ये ख्याल आ रहा है कि परम पावन सिर्फ बौद्धों के ही धर्मगुरु हैं, तो गलत। समारोह में पहुंचे हजारों से ज्यादा की भीड़ में जितने बौद्ध अनुयायी हैं, लगभग उतनी ही तादाद में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई भी मौजूद हैं। मसलन परम पावन बौद्धों के लिए जितनी अहमियत रखते हैं, दूसरे समुदायों या धर्मों के लिए भी उतने ही बड़े और पूजनीय हैं। इसकी वजह भी है कि खुद परम पावन करमापा इसी बात पर यकीन करते हैं कि विश्व में शांति और सद्भावना के लिए जरूरी है कि अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया जाए। परम पावन के प्रति आदर और लगाव का नजारा तो ये सीन खुद ही बयां कर रहा है कि किस तरह लोग परम पावन से आशीर्वाद पाने के लिए होड़ मचाए हुए हैं। चोकोलिंग मॉनेस्ट्री से परम पावन करमापा का काफिला निकल पड़ता है खौली गांव की ओर। खौली गांव में घर घर से जनता उमड़ पड़ती है परम पावन के दर्शन के लिए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और तिब्बती वेशभूषा धारण किए अनुयायी परम पावन का तहे दिल से स्वागत करते हैं। खौली गांव में ही परम पावन अब शामिल होते हैं बच्चों के इस कार्यक्रम में। परम पावन के सम्मान और स्वागत में इन नन्हे मुन्ने बच्चों ने काफी तैयारियां कर रखी हैं। परम पावन के सम्मान में स्कूल के प्रधानाचार्य कुछ इन शब्दों के साथ परम पावन का स्वागत करते हैं। To have with us His Holiness Karmapa ji. स्कूल में परम पावन बच्चों को सफल जीवन जीने के गुर बताते हैं। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में भी हम आपको दिखाएंगे परम पावन की केरल यात्रा से जुड़ी झलकियां। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम। क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां।
Namaskar, Trishtile. My name is Kunkatundu. I'm an astrologer from Tibetan Medical and Astro Institute. The following are daily predictions for the month of September. 7th September 2010, Tuesday, 29 lunar day and 7 lunar month. Elemental combination is fire, water. That elemental combination and has the energy of bringing death. However, negative activities such as taking lives of others, making curses will be more effective. Avoid Lomche. Lomche means 3 years to observe their 1 year death anniversary for the deceased. This day, the Lord of Earth or Sadak, Yangon is also there. So refrain from doing constructions, marriages, celebrations, shows and festivals. This day is also Sojong, thus a good day for generating merits and purifying negative deeds. Pumdong or empty vase is at the east direction, so important activities should not be done while facing east direction. 8 September 2010, Wednesday, 30th lunar day and 7th lunar month. Elemental combination is fire, water. That combination, but negative activities such as taking lives of others and making curses will be effective. In addition, this day is Shangin or bad day, which is also unfavorable. This day is also unfavorable for almost all kinds of activities, especially for the people who belong to horse and snake years. Pumdong is at east direction, so important activities should not be done while facing east direction. Thanks for watching. See you tomorrow at same time in same channel. शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। The possibility of elimination is destructive emotion. So therefore, in Buddhist text, there quite a lot of information about emotion, about mind. And then also, I think particularly in tantric teaching, since the tantric teaching also involve some, what's the physical, No. Usually we call zoluntigli. Yeah, some manipulation and application of physiological forces. So therefore, you see, it mentioned the sort of different level of mind, Subtleties. like grosser level of mind, and more subtle, like that. That mentioned only in tantric text, in tantric teaching. So for example, just this moment,
our sensorial consciousness or mind fully functioning, active. Although simultaneously, the thought thought also go simultaneously. But sensorial consciousness are much more dominant. Then during dream time, the sensorial consciousness no longer function. Only thought, another level. Then during deep sleep, without dreaming, another level of deeper level of consciousness of mind. So then also, when at the time of fainting, even stop breathing, another level of deep level of mind. Then at the time of death, all physiology, physical things, now for example, the heart beating stop, then blood circulation in the brain within a short moment cease. Then all the neurons now no longer function. So all grosser level of mind then stop. I think something like human mind then no longer there, stop. But the only indication, we ordinarily we can notice that some people after death, at the time of death, physical level, death, clinically recognize or declare death. But the body remains very fresh. Now one example, my own senior tutor, after death, about next 13 days, his physical, his body remained very fresh. And then recently, one senior No, a Tibetan Lama, the former throne holder of Ganden. I think last year, after he Passed away. Passed away, I think next almost 3 weeks, his body remained fresh. So fortunately, at that time, as soon as I heard that Rinpoche's body still remained fresh, so then I asked one medical center in Dharamsala, if possible, some mission to check a person who remained in that state. So some simple mission available. So I sent a message to them, and then they sent some people and carried those simple mission and put some wires on the head like that. So although they very detailed analysis not yet sort of finalized, but seems that after a few days, clinically dead, some weak electric sort of movement. Signals. Signals. Some electrical signals were there. In brain. So it is, they say, very unusual. So that we believe that still that person's innermost or subtle mind is still in the body.
So some influence in the body. So that is we call most subtle consciousness. So there are many levels. So, talking about the classical Buddhist sources for understanding the nature of mind, one important source is the Abhidhamma literature. And in the Abhidhamma text, particularly in the Abhidhamma Kosha, which is the treasury of knowledge by Vasubandhu, when he talks about the death process, and he talks about how the kind of the various moments of consciousness, one give rise to another consciousness, and also the transition from a virtuous state of mind to a neutral and to a non-virtuous state of mind, and vice versa. When he was explaining this, in this context, he explains that the moment of consciousness at the time of death can be, depending upon different individuals, and at that particular situation, some of them can be a virtuous, some of them can be a non-virtuous, and some of them can be simply a neutral state of mind. However, in Asanga's Abhidhamma Samuccaya, another Abhidhamma text, compendium of knowledge, here he says that if you kind of really analyze the moment of consciousness at the point of death, at that very subtle point, the state of mind can neither be virtuous nor non-virtuous. It is beyond that dichotomy of virtue versus non-virtue, but rather it is a completely neutral state of mind. And then another source for the Tibetan understanding of the subtle levels of consciousness is the Vajrayana, the tantric teachings. And there it is acknowledged that even that subtle moment of consciousness at the point of death, for a yogi, an experienced meditator, it is possible to affect that state of mind from a neutral state to a virtuous state. So the point here is that the destructive states of mind, the non-virtuous states of mind, they can only operate up to a level of consciousness, and beyond which a very subtle the subtle levels of consciousness arises, then these non-virtuous and destructive emotions and thoughts can no longer function. So that suggests that the destructive and non-virtuous mental states are dependent upon there being comparatively a grosser level of consciousness.